Now it is visible, sir. Visible now? Yes, sir. Okay. The next topic that we are starting is materials management and inventory control. What we are going to cover here, majorly we are going to focus on two things. Rest of the things we can touch upon only just as a discussion and a theory. So the two things that we are going to focus majorly are ABC analysis and basic EOQ model. That is economic order quantity. EOQ means economic order quantity. That means what should be the right order size that I should actually handle. So now what is an inventory? As we came till now during our discussion, we understand inventory as any. These are actually your resources which are being used either for converting the raw material to your finished goods. Inventory में आप दो तीन तरह का देख सकते हो. One is a resource which gets transformed from one form to another. That means from raw material to a finished goods and work in process. तो ये तीन stages हो गए उसके, raw material, work in process and finished goods. So that's an inventory. अब inventory में we do also have the other resources which are your transforming resources. Okay, that is your tools and equipments which you use for the conversion process. So those are also resources. Those are also a part of your inventory. Now, which inventory we should focus upon, which can help us in bringing down the cost. So tools or techniques तो भाई use करने हैं, मतलब वो वैसे ही रहेंगे. We cannot reduce them. So the other inventory, that is the raw material, work in process and finished goods. Finished goods तो would be very much based on the demand. So we cannot reduce that. So we can only just work upon the raw material and the work in process. When we say work in process, that means वहां पर that can be managed only by a good layout. तो work in process ज्यादा देर के लिए work in process नहीं रहेगा. It will get converted into a finished good. So फटाफट जैसे ही वो convert हो गया तो उसका काम खत्म हो गया. It starts bearing value. अगर वो work in process से इसमें finished goods में half condition में रहेगा, half converted condition में रहेगा, that means work in process condition में ही रहेगा. So it will not have that much value what it can. Okay, उल्टा raw material के बराबर भी उसकी value नहीं हो जाती. What is left out is only just a scrap value. Fine. So there are two areas which we normally will be focusing upon here. One is on work in process, the other is your raw material. So work in process that can be managed using the right layout and the processing speed. Now the only thing that is left out is your raw material. Now, how much raw material should I procure and what should be the right quantity? That is what we will be looking at. So when we look at inventory, inventories are idle resources maintained in various forms like raw material, purchased and manufactured parts, sub-assemblies and finished product. The reasons for carrying inventory: either we want to improve the customer service, customer आता है तो he should not be sent back empty-handed, or second thing is when I am going to carry inventory, it is going to reduce my cost in terms of economies of scale. Correct? Sir. At the same time, अगर किसी और के पास में नहीं है, so if I am holding an inventory, and that is the time when if there is a change in demand, all of a sudden demand बढ़ती है. So if I am holding an inventory, I can immediately manufacture and give it to the customer. But if I am not holding an inventory, और जैसा कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, so क्या होगा? I will not be able to cater to my customers' requirements. Okay? Sir. Yes. सर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी रहता है ना, बट मतलब हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी रहता है. वही सब चीजों को हम लोग लेकर के वी विल वर्क आउट कि इन्वेंट्री होल्ड करने का कि नहीं करने का, और होल्ड करने का तो कितना होल्ड करने का.
Yeah, that is will be coming the yoke. Yes. Okay. See, inventory holding cost है. At the same time, if I'm holding an inventory, I'm running a risk also. So risk भी है. But at Right, the sir. same time, opportunity loss नहीं होंगे. Whenever there is a demand from a customer, immediately I will be able to service him. Okay. Right, sir. So that's an advantage. You will be able to manage irregular supply and demand. Since you are holding an inventory, that means you are buying in bulk. So you will be able to gain quantity discounts. Okay. You will be able to avoid stock out situations also. Inventory management basically will be looking at combining the information technology and business process of maintaining appropriate level of stock. That means how much stock I should hold. That is what we are actually looking at, inventory management, and when to order and how much to order. These are the two things which we are going to address here. Right? The activities of inventory management, it includes identifying the inventory requirements, setting up the targets, providing replenishment techniques and options, monitoring the item usages, reconciling and the inventory balances, and reporting inventory status. When we look at the different types of inventory, we can have safety or buffer inventory. Pipeline is which is in the transit. मतलब अगर मैंने supplier के पास से मंगाया हूँ, okay, but it has not reached me. So I am still the owner of that inventory which is in transit. So in pipeline. If I have already dispatched it from my factory and it has yet not reached my customer, so I am still the owner of the inventory. So that is also will be considered under pipeline inventory. Clear? In process or transit inventory. इसमें even work in process भी आ जाता है, WIP. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The second thing is cycle stocks. Cycle stocks means मैंने एक set of raw material मैंने लिया, उसको convert किया finished goods में, अब मैंने second set लिया. So that is cycle stocks. Okay. Third is safety stock. When I have placed an order with my supplier and he has yet not turned back, so I need to have some stock with me so that my production doesn't stop. So that's a safety stock. Clear? Yes, sir. Then we also look at seasonal inventory. Let us look at example of fruity. अब ये आपको आम तो बस सिर्फ सीजन में ही मिलता है ना? हाँ सर. तो फिर भी आप फ्रूटी तो पूरे साल खरीदते हो. Yes, sir. So how do you get it? Sir, Sir, because, cold storage? Yes, cold storage. Company has taken a stock और उसको संभाल करके रख करके वो उसको यूज करते जाता है. So that is seasonal inventory because that inventory can be accumulated only during the season. Yes, Okay. sir. Then anticipation inventory. कल को आपको लगता है भैया सोने का दाम और ऊपर बढ़ने वाला है, क्या करोगे? खरीद के बैठ जाओ. पहले से खरीद के रखेंगे. हाँ. करेक्ट. आपको मालूम है कल को सोने का दाम गिरने वाला है, क्या करोगे? बेच दो. बेच के रखेंगे. बाद में खरीदेंगे. खरीदार. So these are anticipation. So you hold or release inventory based on the anticipated costs. ठीक है. आपको पता है कि कल को हो सकता है शायद ना मिले, तो हम पहले ही होल्ड करते हैं. जैसे अभी कोरोना का ये सब कुछ चालू हुआ, लोगों ने क्या किया? हम सबने 2 महीने का सामान ला करके स्टॉक किया था. हाँ सर. राइट. Yes, sir. है ना? So anticipation inventory doesn't mean only because of cost, but also because of irregularity of supply. So the minute you see that possibility, you try to
safeguard yourself. Okay. And then decoupling inventory, that we have already talked about when we were discussing line balancing. तो उसमें क्या होता है कि दो स्टेजेस के बीच में, ताकि वो स्पीड मेंटेन रहे, उसके लिए वी मेंटेन दैट decoupling inventory. Clear? Yes, sir. So now, what are the kind of decisions or decision areas related to the inventories? Broadly, we can categorize them under three. One is your raw material, second is work in process, and third is finished goods. So in transit में जो है, इन ट्रांजिट में जो होता है वहां पर डिसीजन एरियाज रहता है, डिजाइन ऑफ योर सप्लाई सिस्टम, सप्लाई लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन मोड. ओके, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल. बट वही सेम चीज जब आपका वर्क इन प्रोसेस पे आ जाता है, सो डिजाइन ऑफ योर लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम. ओके, व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर फिनिश्ड गुड्स, सो डिजाइन ऑफ योर प्लांट लोकेशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहां पर किसको कितना, कौन से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कितना देना है. ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट रूट शुड बी फॉलोड, कौन से डीलर को कितना देंगे, वो सब कुछ आपका फिनिश्ड गुड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. तो ये आपके इसके रेडी रेफरेंस के लिए सब पूरा डाला हुआ है. तो एक बार जस्ट देख लीजिएगा, आपको लगता है कहीं पर कुछ पूछना है तो प्लीज बोलिए, आई विल एक्सप्लेन राइट अवे. Then we have talked about inventory related costs at three different levels. One is your procurement cost, inventory carrying cost, and the cost associated with your stock out, that which are opportunity cost. Inventory carrying costs में बोलेंगे तो cost associated with the existence of your inventory, and procurement means it may or may not be dependent on the quantity. Normally it is not related to quantity. अगर मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूं, मुझे अगर मान लो इधर से शॉप तक जाना पड़ेगा, तो आने जाने का जो खर्चा है, उधर वो सप्लायर से फॉलो अप करने का जो है, मुझे क्वालिटी चेक करने के लिए एक ऑडिटर भेजना पड़ेगा. सो ऑल दीज काइंड ऑफ कॉस्ट वुड बी कॉस्ट रिलेटेड टू योर प्रोक्योरमेंट. ओके सर. जरा ये ऊपर का एक टेबल जरा देख लीजिए. इफ यू फील दैट एनीथिंग नीड्स टू बी एक्सप्लेन, प्लीज लेट मी नो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा. Okay, just a minute. Yeah, please. सर वो इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट में कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टॉक आउट्स का मतलब वही ना, मतलब कुछ अगर स्टॉक खत्म हो गया तो शॉर्टेज हो गया तो हाँ, करेक्ट. हाँ, सो एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, दैट इज वन. सेकंड थिंग इज, अगर मेरा वो कस्टमर काफी अच्छा कस्टमर है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे पिक इट अप फ्रॉम समबडी एल्स एंड देन डिलीवर इट टू हिम. सो इन दैट केस डेफिनेटली अगर मैं मार्केट से उठा करके उसको दूंगा, तो it would be expensive for me, so my profit margins will reduce. yes sir, right. Okay, so those are stock out related costs. और कई बार इवन ये भी होता है कि फिर मैं अर्जेंसी में सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा वो 2-4 यूनिट्स बनाऊंगा, so then it would be expensive. But वहीं जब मैं बल्क में बना रहा हूँ, तो that time it may not be that expensive. So those are stock out related costs. Yes sir. और
I'm on the same screen na, inventory control models and methods. We are looking at bin card. Correct? Hello? Yes, हाँ sir. सर, yes sir. Done. Okay. So these are basically the kind of information which is available in the bin card is only just related to the inventory, movement of inventory. That means कितना उसमें आ रहा है, कितना जा रहा है. Normally जस्ट आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके पास में एक ड्रॉअर है, उसमें छोटे छोटे नट्स रखे हुए हैं, ठीक है, ऑफ वन स्पेसिफिक साइज. अब उसमें बाहर के साइड में ही ना एक छोटा सा ऐसा ये रहेगा स्टोरेज स्पेस, जिसमें कि आप वो कार्ड ऐसा फंसा के रख सकते हो. तो whenever somebody wants to actually take anything out of that drawer, so जितना भी वो मटेरियल ले रहा है, that is entered in this bin card and it is again placed there at the counter itself. वो ड्रॉअर के ऊपर में एक छोटा सा एनवेलप जैसे रहता है, उसी में डाल दिया जाता है. Whenever anything is received, so it is again entered into the it is basically kept in the drawer and the subsequent entry is made in the card. So this is how this bin card actually looks like. अब कई जगह पर देखा जाए तो bin cards are no longer physical. Earlier they used to be physical. Now the bin cards are in a digital form. So आप उधर पर just material डालते हो, automatically जो आजकल ये भी हैं storage racks जो होते हैं, they are smart storage racks, तो वो automatically identify कर लेते हैं क्या material है, कितना है, okay, quantity. और वो काफी कुछ आपका it again cross checks with, जब आप inward ले रहे थे तो आपने उसको scan किया होता है, तो वो scanning से उससे उसको idea लग जाता है कि कितना quantity उस वक्त inward हुआ, इधर पर कितना आया. If there is any discrepancy, वो immediately highlight करता है. So that's how it is actually taken care of. Now, inventory management models में अगर देखा जाए तो there are two aspects to it. One is the recording of it, so that appropriate decisions can be taken. And the second thing is the management aspect. So FIFO, LIFO, all these are basically your accounting practices. Okay, it helps you in terms of managing how it would be accounted for. Okay, then comes ये simple average, weighted average, ये चीजें आप लोगों ने already की हुई हैं, तो we'll not get into that, which I talked to you earlier also. We'll look at ABC classification. What do? Is we categorize the materials into 3 parts. Okay, A, B, and C. The weightage of category A, category B, and C are some based on different properties. So एक category एक ये रहता है जहाँ पर कि category A items would be the items which are expensive, or rather they will account for 80%, okay, 70 to 80% of your total inventory value. When I say value, that means total cost. Total, yes. Okay, so total inventory value. And whenever we look at inventory, that doesn't mean only just one type of stock. Okay, it is multiple type of materials coming in. Yes. Okay, now what happens is the stocks which are contributing to almost 70%, 80% of your inventory value, अगर उसमें थोड़ा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ओके, सो मेरे लिए वो मतलब काफी डेंजरस रहेगा. फॉर एग्जांपल मान लो काफी प्रीशियस आइटम है, हाँ, और जैसे कि गोल्ड हो गया, उसमें से 2 ग्राम भी अगर गायब हुआ तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, और 15-20 ग्राम तो इजीली कोई भी गायब कर सकता है ना, मालूम भी नहीं पड़ेगा. Correct, na? Yes, sir. Yes, sir. So, in this kind of items, actually, these needs to be having a close control. मतलब उसको काफी उसके लिए जो आपका सिक्योरिटी और ये सब चीजें, अकाउंटिंग, ये दोनों काफी क्रिटिकली
चेक की जाएंगी. बट व्हाट अबाउट द कैटेगरी सी? कैटेगरी सी में नॉर्मली आपका वो छोटा आइटम्स वगैरह जो रहता है ना, जो कि वॉल्यूम में काफी रहता है और वैल्यू में काफी कम रहता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग चॉकलेट्स वगैरह हो गया, ठीक है, चॉकलेट्स वॉल्यूम में काफी है बट वैल्यू वाइज कम है. ओके, सो वहां पर वो लोग उस चीज को इतना ज्यादा एकदम क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे, रफली चेक किया जाएगा. जैसे आप अगर उसके लिए फिर ना उन चीजों को मेजर और देखने का तरीका भी बदल जाता है. जैसे आप कभी हार्डवेयर से जाकर के वो नेल्स वगैरह खरीद के लेके आए हैं? Yes, sir. कभी उसको बोला है 2 कील दे देना, 4 कील दे देना? नो सर, नहीं, हमेशा 50 से आप ऐसे ही लेते हैं ना, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं. लाइक ग्राम्स में लेते हैं सर. ग्राम्स में लेते हैं, करेक्ट. हाँ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर इज, उधर पर 2-4 आप गिन नहीं सकते हो, और 2-4 अगर वो जब वो ग्राम्स में देता है तो 2-4 उसमें खराब भी होता है, तो वो उसमें एक पीस आपको चुनने नहीं देता है. उसने बल्क में उठाया, उधर पर डाला, पैक किया, आपको दे दिया, लेके जाओ. ओके, यू वोंट बिलीव, आपका जो डायोड्स है ना वो भी इसी तरह से मिलता है. और क्या बोला आपने? डायोड्स तो क्या रहता है वो? डायोड्स, DIODES. अच्छा, ओके. LEDs. LED, yes. LEDs ना सर? हाँ. सो हम लोग इसी तरह से इवन बैटरीज भी खरीदते थे. आवर्स वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हर एक इसमें रिमोट वगैरह सब कुछ रहता है, तो आपको बैटरीज भी लगती थी. सो हम लोगों को जो बैटरीज जो मिलती थी ना, जो आप लोग इधर पर, हम लोग इधर पर रिटेल में 12-15 रुपए का खरीदते हैं एक बैटरी. ओके, वो हम लोगों को 3-4 रुपए की होती थी, और इवन लेस, बिकॉज वी यूज्ड टू बाय इट इन बल्क. ओके, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक बॉक्स खरीद लिया. एक दिन में उससे एक बॉक्स से ज्यादा हम लोगों का कंजम्पशन हो जाता था. व्हेन आई एम सेइंग कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड था, प्रोडक्शन रेट था फॉर स्मॉलर टीवी, दैट इज 14 इंच वाला जो टीवी था, वो अराउंड 1800 to 1900 टेलीविजन्स पर शिफ्ट बनता था. सो अगर आप 1800 के हिसाब से भी पकड़ेंगे, हाँ, या हम कन्वीनियंस के लिए 2000 ले लेते हैं, 2000 अगर हम पकड़ते हैं, ओके, एंड 2000 में हर एक में 2 बैटरीज गया, सो दैट मीन्स आई विल बी यूजिंग कंज्यूमिंग हाउ मेनी बैटरीज? 4000 बैटरीज एट दैट वेरी मिनट इटसेल्फ, ओनली जस्ट इन वन शिफ्ट. ओके, सो ये हम लोगों के लिए कैटेगरी सी आइटम हो गया, करेक्ट. It may not be category C for some other company. For example, जिसका इतना ज्यादा यूसेज ना होता हो, बट वहीं पर टॉय मैन्युफैक्चरर के लिए अगेन इट वुड बी अ कैटेगरी सी आइटम, करेक्ट. मोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए बैटरीज आर कैटेगरी सी आइटम, ईयरफोन्स आर कैटेगरी सी आइटम. क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू ज्यादा नहीं है. क्लियर? सो व्हाट वी डू इज वी categorize your entire inventory into 3 parts. Okay, category A, category B, and category C. Category A may consume 70 to 80% of your total value. Category B may be around 20% to 10%, and category C may be from 5 to 10% of inventory value. Yes. ओके, अब इसमें ना कंपनी के हिसाब से दिस परसेंटेजेस आर वेरिंग. कुछ कंपनीज इवन कैटेगरी ए के लिए 60% के हिसाब से चलती है. ओके, कुछ में वो 60 की जगह 70 होता है, किसी में 70 की जगह पर 80% होता है. ओके, सो इट इज डिफरेंट. फॉर कैटेगरी ए इट इज ऑलवेज क्लोज डे टू डे कंट्रोल. फॉर कैटेगरी बी, timely review, and category C,
कभी एक अचानक कभी जरूरत पड़ा लगा कुछ डाउट है तो then only you check, else you don't check also. So Sir, infrequent. Yes. सर इवन इसका इन्वेंट्री में जो कैटेगरी ए मतलब जो कॉस्टली है वो हम लोग सबसे नजदीक रखते हैं मतलब डे टू डे कंट्रोल के लिए और जो वो अभी इसमें ना एक और ये रहता है कैटेगरी ए नजदीक वाला नहीं है, उसके लिए कुछ और भी एक और कुछ अलग मेथड्स है। आई विल जस्ट शो यू, एक सेकंड। ओके सर। यार मेरा सिस्टम ना रो रहा है। हाँ, ये देख रहे हैं इस तरह से रहता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, FSN। सो यस सर। जो काफी फास्ट मूव कर रहा है वो आप अपने पास में रखते हो, स्लो मूविंग थोड़ा सा आफ्टर द फास्ट मूविंग वन, एंड नॉन मूविंग और वेरी स्लो मूविंग आर एट द एंड। ओके, सो इसमें कई अलग अलग तरह के कैटेगराइजेशंस होते हैं। एबीसी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वन क्योंकि वहां पर कॉस्ट आपकी आ जाती है। सेकंड इज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। ये आप नॉर्मली अपने रॉ मटेरियल्स और जो एक मतलब स्टोर्स में जो आइटम्स वगैरह लगते हैं उनको उनको आप इस तरह से कैटेगराइज करते हो। सो एनी ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज वाइटल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर दिस थिंग, उसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करते हो। एसेंशियल थोड़ा सा कम, एंड मतलब डिजायरेबल आप उस हिसाब से हर एक के लिए अलग अलग रूल्स जो होते हैं, मैनेजमेंट रूल्स आप अलग अलग तरह से डिफाइन करते हो। ओके, अब कई कुछ कुछ जगहों पर एबीसी की जगह पर XYZ भी यूज किया जाता है। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम्स, हाई टू लो। ठीक है। ओके सर। Another type of model which is inventory management model which is used is SDE, scarce, difficult and easily available. ये रॉ मटेरियल के लिए होता है। जो इजीली अवेलेबल है उसका आप ज्यादा स्टॉक नहीं करते, बट जो स्कैर्स है यू स्टॉक इट मोर। ओके, और उधर पर एक जो आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल्स भी होता है वो भी हायर रहता है। ओके, डिफिकल्ट के केस में सेफ्टी स्टॉक लेवल्स वुड बी a bit less as compared to scarce, and easily available के लिए you don't hold inventory only. Okay, then Yes. you have seasonal, off seasonal. तो इस तरह से अलग अलग कई अलग अलग तरह के categorizations है which you take into account. Okay, what we will do is we'll take up a numerical and work it out. Fine. So यहाँ पर ये एक है which is इसको ही हम लोग लेकर के करते हैं, rather than explaining it to you without doing it, we will do it and see how it goes. Okay. I'll just copy this data. ये मैंने एक्चुअली एक्सेल शीट इसके अंदर एम्बेड किया हुआ है, बट वो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है। यार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ में ना ये सब बहुत प्रॉब्लम देता है। सर बहुत हैवी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, उसके साथ कुछ और चलाते हैं तो बाकी सब लैग होता है। हाँ, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था सीक्वेंसिंग का। जस्ट ओपन अ न्यू वन। मुझे स्क्रीन शेयरिंग चेंज करना पड़ेगा।
I'll have to just write them again क्योंकि वो मेरे को करने नहीं दे रहा है. Item number, unit cost, and annual demand. Here it is expected that we have to categorize them based on ABC. Okay, so ये item numbers है. Normally items are not called up by their names, they are called up by their codes. So item number, it is basically a type of code which is provided to them. I'm just retyping the information that is available. This is the annual demand in terms of number of units. Sorry, zeros का गड़बड़ हो गया. Okay. This is the information which is available with me, and I have to set it up as to categorize them under A, B and C item units. Correct? अब इसको हम कैसे करेंगे? सर वैल्यू एंड क्वांटिटी देखते हैं ना उसके. Sorry. पहले सबसे पहले हाई वैल्यू जो रहता है वो ए रहेगा ना सर, जो हाईएस्ट वैल्यू है. फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 103. First thing is we have to find out the values. ठीक है, हर एक का पहले वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा. करेक्ट ना? यस सर. हाँ, सो पहले हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं. सो हाउ डू वी गेट दैट? इट इज डिमांड इनटू कॉस्ट. डिमांड इनटू पर यूनिट कॉस्ट. तो मेरे को उस तरह से पूरा इसका वैल्यूज मिल गया. बराबर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज वैल्यू मिलने के बाद में मुझे क्या चाहिए? मुझे इनको एज पर द ये कैटेगराइज भी करना होगा. बराबर ना? सो इसको एज ए टेबल डाल देते हैं तो अपने को बाद में आगे का नेक्स्ट ऑपरेशंस कुछ करना है उसके लिए थोड़ा आसान रहेगा. So Control T can be used to make it as format as table, or you can use this option. Okay. So ये आपका as values हो गया. Now since I have to categorize them, okay, based on First the we'll find percentage of it. So मेरे को एक और चीज लगेगी. एक तो टोटल रो चाहिए होगा. I have already created it just by clicking this option. नहीं तो मेरे को इधर पर equals to sum करके लिखना पड़ता था. बराबर. तो ये सबका summation is basically this value. अब आप समझ रहे हो why did I formatted it as a table? Yes sir. मेरा बहुत सारा काम आसान हो जाता है ना. फॉर्मूला भी डालने का मेहनत बच गया. Okay. So now let me look at the percentage contribution of it, of everything. Percentage contribution. Okay. So percentage contribution is this value divided by This the total value of the inventory. Correct? And अभी ये मेरे को सभी के लिए ओवरराइट ऑल सेल्स कर दूंगा तो क्या होगा? सभी का वैल्यू अपने आप आ गया. सर ये कैसे हुआ? हाँ देखिए, आई विल शो यू अगेन. ओके. यस सर. मैंने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ. तो जब मैं उसके इमीडिएट सेल पे बाजू के सेल पर करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली उसको उस टेबल में इंक्लूड कर लेता है. ओके.
a lot of good features with Microsoft Excel if you actually use it. Okay. Now, if I have to calculate percentage of this, of item number 101, so it would be this value divided by sum total of all, which is this value. Yes, sir. Correct. So equals to this value divided by sum total of all. Correct. Yes, sir. And I say enter. So it gives me how much percentage it is. 34. ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा ना, but 3.4. So इसमें ना जैसे ही आप ये लिखते हो ना, तो उसके बाद में you get this auto correct option. It also helps you in terms of auto filling. So आप बस सिर्फ इसको क्लिक करके, या आप डायरेक्ट भी ऐसे क्लिक कर सकते हो. You get this. So वो सभी का परसेंटेज उसने कैलकुलेट कर दिया. Now this was your highest value item, 3,60,000. देखिए it is contributing to around 51.8%. अब अगर मैं एक को परसेंटेज भी करके करूं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं. ओके. एंड फॉर्मेट प्रिंटर लेकर के आई हैव फॉर्मेटेड ऑल ऑफ देम द सेम वे. यहां पर भी आई कैन जस्ट क्लिक हियर एंड से सम. सबका सम टोटल इज इक्वल टू 100%. करेक्ट. Yes, sir. Now the next thing is I need to identify the ones which are contributing to 80%, और ज्यादा जो हाई वैल्यू वाले हैं वो ऊपर आने चाहिए. Descending order. Descending order. Sort them. Sort them based on what? Descending order. Highest first. Value. Sort them based on value. So automatically sorting them based on value or percentage, it is the same. Okay. So largest first. ठीक है. एक्सेल में आप कर रहे हो तो आपको अलग अलग टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है. इट डज एवरीथिंग. मतलब लिटरली इफ यू यूज एक्सेल टू इट्स कैपेबिलिटी, ओके, इट इज वेरी पावरफुल. आज तक अगर मैं अपने आप को अगर मैं रेट करूं ना, सो व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेल, उसके कंपैरिजन में आई नो ओनली जस्ट 10% ऑफ इट. ओके. We can use Excel in the exam. हाँ भाई, ये वाला तो anyway it's going to be online. तो सर एक्सेल मतलब ऑपरेशंस के पेपर में हम एक्सेल सारे न्यूमेरिकल्स एक्सेल में कर सकते हैं. Go ahead, you are free. क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा सर. देख भाई, तुम्हारा पेपर तो मैं ही चेक करने वाला हूँ ना. हाँ सर. I am okay with it. थैंक यू सर. Thank you, sir. Okay. If you want to do it manually, you can do it manually. आपके पास में टाइम ज्यादा है तो आप करते रहना. But if you use Excel, आप देखो आपके सब काम ऐसे एकदम से, मतलब it is like just ऐसे करने वाली बात है, चुटकी बजाने वाली बात है. Okay. Yes, sir. हाँ, so unnecessary. Let's not waste our time in doing calculations. Let Excel do that for us. We should only know what formula to put in. ठीक है. सर परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? Percentage is nothing but whatever is the total value. Okay. It is like this, equals to the value of the item divided by the total value of the inventory. Okay. जैसे तो हम फिक्स कर सकते हैं ना टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. उसको फिक्स किया तो भी चलेगा ना, ड्रैग किया तो आ जाएगा. हाँ, मतलब इधर पर ना ऑप्शन है यार. अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ना ऑप्शन रहता है, आपको सम लेना है, एवरेज लेना है, क्या लेना है. हाँ सर, राइट. हाँ. सो सी, मैं एनीवे आई एम नॉट हियर टू टीच यू एक्सेल, बट ओके, मेरा काम जो करने का है, मेरे को जो कैलकुलेशंस जो करना है, अगर एक्सेल को यूज करके इफ आई एम एबल टू डू इट फास्टर, देन व्हाई आई शुड नॉट बी डूइंग इट. एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी प्लगइन्स. ओके, आई एम यूजिंग द बेसिक वर्जन ऑफ एक्सेल
and this will help me in terms of like कहीं पर भी जाऊं तो I can use it. Yes, sir. We have Yes, taken sir. only just 10 items here. Do you think inventory will hold only 10 items? No, sir. No, No. sir. Let us look at if you are a store in charge of an organized retail store. Can you imagine what could be the SKU count, stock keeping unit? In lakhs. Yes, near about. क्योंकि अगर आप पार्ले जी का छोटा वाला पैकेट और पार्ले जी का बड़ा वाला पैकेट भी लोगे, both of them will be counted as different SKUs. Yes. So प्रोडक्ट बदल गया. So आपको हर एक चीज का ट्रैक रखना है. Sir, STU का full form बताओ ना sir. Stock keeping units. Stock? Keeping units. तो SKU हो जाएगा ना वो. SKU हाँ, हो जाएगा ना सर, stock keeping units. Stock keeping units. हाँ तो SKU हुआ ना सर. SKU वही बोला मैंने. नहीं हमें T कुछ सुना इसलिए कंफ्यूज हो गया सर. सॉरी अगर कुछ अलग सुनाई दिया तो इट इज SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स. ओके. सो नॉर्मली आप क्या करोगे, आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल विल गिव यू परसेंटेज. आप उसको परसेंटेज में इधर पर कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो इनटू 100. करेक्ट. बराबर है. हाँ सर. Yes, sir. ओके. सो अब आपका देखिए परसेंटेज आपको मिल गया. अभी इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, it comes to 79.46, मतलब it is around 80%. If I add the next one, I will go beyond. So अभी बार बार मैं ऐसे करके चेक करते रहूंगा, उससे बेटर है let me go for cumulative percentage. So cumulative percentage में क्या होगा, I will add this one first. Okay. Next इसमें what I am going to do is I am going to add this plus this one. So I get 79.4. और अभी मैंने देखिए ये वाला फीचर को काम में नहीं लाया. अगर मैं इसको लाता तो सारे फॉर्मूला एक ही जैसे हो जाते सब इसमें. ओके. You need to know when to use the feature, when not to use it, when to override it. Okay. So I'm not using that feature again and I'm just pulling it down. This 85% is basically earlier one plus the next one. Correct. Next उसी तरह से आप करेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा, let me convert it into percentage. Correct. Now let us look at, now if I am saying my category A 80% के लिए it is category A. ठीक है. उसके बाद में का next 15% will be category B और last 5% will be sorry did you say anything? No sir, was same. Okay. अगर मैं इस तरह से अगर मैं अलग अलग कैटेगराइजेशंस ले रहा हूं, ओके 80%, 15% एंड दिस. सो अब मेरा फर्स्ट सबसे पहला वाला इट विल गो अंडर विच कैटेगरी? कैटेगरी ए. जब तक मेरा 80% तक नहीं होता है टिल देन इट विल गो कैटेगरी ए. अब 80% मेरा हो गया, उसके बाद का 15% एक तरह से देखा जाए तो दैट मीन्स 80% एंड अबोव एंड अप टिल 95%. करेक्ट. सो मतलब जब तक इधर 95 नहीं होता तब तक मेरा इट विल गो अंडर कैटेगरी बी. यस सर. Yes. सो दिस विल बी कैटेगरी बी. कैटेगरी बी. सर बट वो पहले 79.46 तक हुआ है ना, कंप्लीट 80 नहीं हुआ ना. तो अभी इसमें क्या होता है, हमेशा ना आपको एग्जैक्ट 80 नहीं मिलेगा. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अप द नियरेस्ट वैल्यू. अच्छा सर और सर अगर दो वैल्यूज हुई, एक एग्जैक्ट 80 से थोड़ी नीचे हुई और एक एग्जैक्ट 80 से थोड़ी ऊपर हुई, तो नीचे वाली लेंगे कि ऊपर वाली लेंगे? मतलब अगर नीचे वाली लेंगे, 80 से कम वाली लेंगे ना.
नहीं नहीं, अभी देखो, let me give you another this thing. Let us say I am getting one as 78%, हाँ, और दूसरा वाला आ रहा है 81%. तो 81 लेंगे क्योंकि Which छोटा one is closer? 81 is closer. 81 is closer. So this will be A. This will also be A. Okay. ओके सर. Okay. So whichever is closer, आप उस हिसाब से लेते हो. Fine. अभी यहाँ पर 79 के बाद में next was 85, which was further, काफी दूर था. So I have taken it as यहाँ पर तक A, next is B. What about this one? Category C. यस सी. C. Now, तो हमेशा this ऐसे ही is रहेगा, like it was 80% will always be A. sorry. तो हर बार ऐसे ही रहेगा, like A will be always be first 80%, B will be next 15 and C will be next 5%. ये हर बार ऐसे ही रहेगा ना सर? Normally 80, 15, 5 यूज किया जाता है, बट कभी कभी मैंने लोगों को देखा है इवन ऑल्सो यूजिंग 70, 20 एंड 10. वहीं पर कुछ लोगों को मैंने यूज करते हुए देखा है 60, 30, 10. सो या तो आपको एबीसी बताया होगा, नहीं बताया होगा ब्रेकअप, तो यू कैन एज्यूम समथिंग, एंड वॉट एवर दैट यू एज्यूम, एंड then you have to do the bifurcation based on your assumption. Indicate your assumption. This is my assumption. Okay sir, got it. Normally if I say ABC, by default this is what we are looking at. Clear? ओके सर. यस सर. Yes sir. Any doubts here? No, sir. No sir. नो सर. Okay. अभी एक सेकंड, मैं आपको जस्ट पीपीटी पे वापस लेके जाता हूं, एंड देन वी विल टेक अप, देखते हैं इफ वी कैन टेक अप, देन वी विल टेक, एल्स वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन. मैंने मेरे पीपीटी में आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन. ओके, किस तरह से करना है. फाइन. सो यहाँ पर एक एक स्टेप वाइज हर एक स्क्रीनशॉट डाल करके मैंने किया हुआ है. ठीक है. ये आपका कौन कौन सा आइटम कैटेगरी ए में आएगा, कौन सा बी में आएगा, कौन सा सी में आएगा. अब अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ आइटम्स, अभी कैटेगरी ए में आपका गिन के 2 ही आइटम आया आउट ऑफ 10. सो परसेंटेज वाइज, numbers wise it is less, but value wise it is more. Okay. Similarly for category B, number of items are more than category A, but value wise it would be less. यहाँ पर this is a peculiar case जहां पर के 40% दोनों एकदम बराबर आया. नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, ये सबसे ज्यादा रहेगा, क्लास सी. ओके. एंड व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट practices do you do? So मतलब इधर पर action would be close control for category A items, regular review for category B items, and infrequent for class C items. Clear? Yes sir. Yes. Sorry, we lost some time today because of technical glitches. Now let us look at this second example. Sir, can you maximum full screen please? Sorry, can you take a screenshot of it, and whenever you get some time, you can try to work it out. Okay sir. Try to do it on your own. तो अपने को श्योर हो जाएगा कि हम लोगों को सच में समझ में आया. No problem sir. We will do it. It would be a great.